Welcome to Smiles Holidays. Welcome to our new podcast, UK and Europe series. Check it out on our YouTube channel, Smiles Holidays. So my first question is, what make a Europe trip so special and how does your company ensure a unique experience for travelers? Europe had been all-time favorites for every Indian. Let's go back to the history. We Indians were always fascinated with the Bollywood movies. Europe was introduced to Indians due to Bollywood movies. The first movie shot by great Raj Kapoor, The Sangam, in 1964 was first shot in Europe. Places like Switzerland, Venice and Paris shown on that pic. So I guess Europe is the all-time favorite for every Indian since 90s. We give the customized travel packages for Europe wherein you get to have your own choices of places, decide your own dates, you decide your own budget. We are there to support you in every aspect of tour. Right from the visas, right from the bookings, everything is taken care of. You are there your own, but still you are enjoying a tour like a group. युरोप म्हटलं ना की एक कॉमन येतं की पॅरिस, इटली, स्विस, ॲम्स्टरडॅम, बस झालं, हे युरोप संपलं. पण युरोपमध्ये पण हिडन जेम्स आहेत. तुम्ही जर क्रोएशियाला बघितलं तर क्रोएशियाची झारदार ही कॅपिटल आहे, ती खूप सुंदर आहे. आणि तिथे निकोला जेम्स यांनी ग्रीटिंग द सन म्हणून एक क्रिएट केलेलं आहे. आणि लिसन टू द साऊंड ऑफ ओशन असे त्यांनी हार्मोनियम टाईप क्रिएट केलेलं आहे. सो दिस इज अ व्हेरी ब्युटिफुल सिटी. जर तुम्ही त्याचे पिक्चर्स बघाल तर क्रोएशिया हे करायलाच पाहिजे. दॅट इज अ वन ऑफ द हिडन जेम्स व्हॉट आय फील फ्रॉम स्माइल्स हॉलिडेज. अँड द सेकंड इज द बर्न. म्हणजे स्विस म्हटलं ना की लुसन, झुरिक, इंटरलाकन एवढंच येतं. बर्नमध्ये सुद्धा त्यांचं एक ओल्ड टाऊन आहे. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ अर्बन अँड म्हणजे लोअर लेवलला एक बुकशॉप, कॅफेज आणि ते आहे, आणि अप्पर लेवलला सगळ्या अर्बन बिल्डिंग्स आहेत. तर आणि तिथलं एक क्लॉक टॉवर आहे. सो इट इज 15th century क्लॉक टॉवर. तर मला असं वाटतं की बर्न पण एक मिस आउट होतं नेहमी. एक इट इज अ हिडन जेम इन स्वित्झर्लंड. अँड द थर्ड इज बर्जन. ऑलवेज नॉर्वे म्हटलं ना की ट्रोम्सोला जाऊया, नॉर्दर्न लाईट्स बघूया, पण बर्जनला ॲक्च्युली द माउंटन्स आर देअर, द फ्युजॉइड्स आर देअर अँड द अर्बनायझेशन, स्मॉल ॲलेज आर देअर अँड यू कॅन रोम इन टू स्मॉल ॲलेज अँड एन्जॉय द युरोपियन कल्चर. तर त्याप्रमाणे ॲक्च्युली बर्जन इज वन ऑफ द ब्युटिफुल सिटी विच आय प्रेफर्ड ऑलवेज की तुम्ही बर्जनला व्हिजिट करायलाच पाहिजे. द फोर्थ वन इज लिले. पॅरिस इज इतकं ओव्हरवेल्म झालं आहे. द लिले इन फ्रान्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफुल सिटी. इट इज फुल ऑफ कल्चर. इट इज replica of the Paris. Only the Eiffel Tower is missing. But you can again wander in the small roads and full straight structure of the European medieval city in Lille also. And the fifth one is Tallinn, Estonia. Tallinn, Estonia has a beautiful, म्हणजे फिनलँड हेल्सिंकीला लोक व्हिजिट करतात, पण Tallinn, Estonia इज अ आर्टिस्टिक सिटी म्हणता येईल. तुम्ही जर तिथे रोडवर जरी गेला ना तरी तुम्हाला खूप सारे आर्टिस्ट दिसतील, कारण की इट इज अ पोस्टर कार्ड सिटी. इट इज अ व्हेरी ब्युटिफुल सिटी. देअर इज अ अलेक्झांडर कॅथेड्रल देअर अँड दॅट seems to be a big cathedral which is again missing out in Europe's itinerary sometimes. So these are the main hidden gems. There are almost 30-35 cities in Europe which are hidden gems, which are offbeat, but for that you have to contact Smiles Holidays. Traveling Europe can be budgeted, because in Europe there are many cities or countries which are short distance, which are covered by buses, trains, airlines like EasyJet, Pegasus. These are the airlines which can be low cost airlines like our Indigo, and you can cover the two country distances with this cheap airline. So traveling Europe is not so much expensive. This is a myth. अगेन द वन मोर मिथ मुझे ऐसे सुनने में आया है कि यूरोप में सिर्फ नॉन वेज ही मिलता है. ऑलवेज चिकन बर्गर, फिश बर्गर. ऑफ कोर्स द मीट इज द मेन फूड इन यूरोप, बट वेज और वेगन फूड मिलता है. और मैंने तो पेरिस में बहुत अच्छी दाल खिचड़ी खाई है. ऑफ कोर्स बार्सिलोना में भी मैंने वेज बर्गर खाया है. दैट इज अ मिथ कि वेज एंड वेगन फूड आर नॉट देयर इन यूरोप. द थर्ड थिंग इज ड्यूटी फ्री. ड्यूटी फ्री इज ऑलवेज चीप, ऐसे अपने को लगता है, बट दैट इज अ मिथ. लेकिन ड्यूटी फ्री इज ऑलवेज नॉट अ चीप. यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द वेबसाइट.
You have to go to the personal stores when you are roaming in Europe and check the prices. Fourth one is carry cash or local currency in Europe. But carry cash and local currency is not feasible for everyone. आप फॉरेक्स कार्ड, ट्रैवल कार्ड ले सकते हो, हर जगह ATMs वगैरह है। और फॉरेक्स और ट्रैवल कार्ड में बेनिफिट ये है कि यूरोप में अलग अलग स्विस की जैसे फ्रैंक है, जर्मनी में यूरो चलता है, हेलसिंकी में यूरो चलता है, लेकिन कहीं कहीं जगह यूरो नहीं चलते। सो दैट बेनिफिट्स द ट्रैवल फॉरेक्स कार्ड कि यू कैन चेंज द करेंसी एंड दे विल टेक इन दैट देयर ओन करेंसी, और उसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं रहते व्हेन यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन योर करेंसी। एंड द फिफ्थ वन इज एवरी एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप कम विद अ हाई प्राइस। ये भी एक मिथ है। कुछ कुछ चीज़ें हैं कि दैट नॉट कम विद अ हाई एंड प्राइजेस, सो दैट comes with a free of cost, comes with a low cost. The youth hostels in Europe, they are not for the family, they are only for youngsters. That is again one more myth is trending, I think so, because hostel is very convenient somewhere in down the line. City center में रहते हैं तो budget friendly option में भी hostels आते हैं, तो आप वहाँ रह सकते हो। Even they have dormitories, even they have couple rooms, even they have all the facilities like hotels. So hostel में नहीं रहना है या हम नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है। That is a one more myth is trending.